bodies. The rape of the other as a vehicle of the masculinization of the Hindu man. The saga continues to date, with multiple efforts to exclude and subjugate minorities, women, Dalits, Adivasis, queer and trans folks, and all those who don't conform to the gender binary. You know, the neat, perfect male as leader of the nation, perfect woman as bearer of the family, nurturer of future generations, anyone who doesn't conform to that gender binary. And of course, those with disabilities. Now apparently blessed with the word Divyang as having divine bodies, yet step by step, through laws, street action, state action, each of these constituencies have been and are being systematically disempowered. So what starts as a rabid anti-Muslim, anti-Christian, anti-Dalit, anti-Adivasi, hate speech and propaganda leads to widespread street censorship of youngsters, targeted violence on Muslim men, state-sponsored Romeo squads, vigilante groups against couples, and of course the lynching of Dalits and Muslims. We cannot forget today Muhammad Akhlaq, Alimuddin Ansari, Pehlu Khan, Una, Jharkhand. These are important markers of our times. These are moments in which fascism has spoken, has been condoned, and as Punyani ji said, it is the work of the organization done through its foot soldiers with impunity. We cannot forget that there has not been any movement towards justice for any of these cases, despite ample evidence. And not only that, all of this kind of censorship and value systems have now been transformed into laws, okay, that reflect precisely these prejudices as entrenched discrimination, systematized hierarchies among citizens. And that is what the difference between fascism outside the state and fascism within the state. Dalits are being increasingly suppressed. Of course, there is, as was referred to before, the co-option of Dalits, the systematic sort of, ghar wapsi, etc. That is one kind of co-option program. But they are being systematically suppressed, attacked, especially in places of spaces of education, where their presence and their growth and their articulation threatens the Brahminical order that fascism in India is built upon. Today, the Trans Act deeply undermines the systematic and intergenerational discrimination that the Supreme Court judgment actually pointed to. Equating it with caste-based discrimination and identifying the suffering of trans people and seeking redressal for that. Today, the Trans Act does nothing to do that. People with disability have gained little, if nothing, from becoming Divyang, not even in times of utter crisis like the present. With the pandemic making it impossible for them to access care, children are being orphaned, carers are dying with no one to care for them, and the disabled are being left at the mercy of just any citizen who can possibly reach them. And that being true for most citizens today who are only being reached out to by other citizen efforts. All this, of course, while the state continues to build huge architectural symbols of its power in the heart of Delhi, not unlike what Hitler did. He built these huge symbols of power that continue to speak to us a century later. At a time when people didn't have jobs, didn't have work, didn't have food, and today much less medicine, etc., etc. In the same stream, laws created through long battles by women's movements to gain redressal against patriarchal injustices are systematically being undermined in practice, if not in word. So you actually have something like the Supreme Court setting the NIA on a task to verify the antecedents of a man who married a woman who converted to Islam to marry him. So, this is the way in which state institutions are being used every day and misused every day. So this is what is happening actually on the ground. What is being evoked, however, is this major Mother India kind of image, Bharat Mata Ki Jai, Vande Mataram, the valorization of Mother India, and by extension, maternity. The touchstone of national belonging, that you become the mother of the nation, you create, you nurture, you reproduce for the nation. So while the so-called love jihad, which is another example of street-level censorship that is turned into anti-conversion laws, prevents Hindu girls from marrying outside the community, basically Muslim men,
At another level, the campaign for Hindu men to marry Muslim girls and have them reproduce Hindu offspring is gaining legitimacy. But then we really need to think, what else could we expect from a party that held a public discourse on how Rajiv Gandhi could not lead the nation because he's born of a foreign woman's womb. In the same stream of thought, ideas of purity, family, community, nation gain foothold in all kinds of areas of legislation, including so-called scientific areas like surrogacy. I just want to take this as one example where the latest law bans commercial surrogacy as a problematic form of women's sexual labor or reproductive labor, however you want to see that. But it only allows married women to offer their womb for others within the family. Okay, so this is altruistic surrogacy, as though women in families have so much choice and autonomy about bearing their own children, much less whether they have any say in bearing the children for others in the parivar. So, and the fact is that this is becoming now so entrenched all over the place. I mean, if you look at something like even on an, coming back to the love jihad idea and this whole anti-conversion, even the corporate world is being controlled and becoming a vehicle of those kind of caste values. So we all remember the Tanishq, which had an intercaste marriage, which was finally pulled off the air. So it's not like the corporates are also getting a free rein. They also have a very clear value system, which they are meant to propagate. And if they step out of line, they will also be pulled back, right? And in this entire chakkar, what is happening is that one fundamentalism, majority fundamentalism and minority fundamentalism then feed off each other. And then community spaces for women, for trans folks, for Dalits starts shrinking because the community then wants to control women, for example, against the fundamentalism of the majority. So all you have is women suffering from both directions. Of course, one of the challenges as feminists we've always faced is that is the involvement of women in communal and caste-based violence. Who can forget images of Uma Bharti or Sadhvi Ritambara and the Ram Janmabhoomi campaign, exalting young women to charge forth and bring down the Babri Masjid. But then that is the power of patriarchy, and that is the power of a dominant fascism, where it brings it into its fold the most marginalized and gives them like a role to nurture and propagate its values, to hold up its fortress walls, if you will. But what it really is as a state power is antithetical to the values of democracy, because it seeks the supremacy of some as opposed to equality for all. Unity and homogenization at the cost of diversity. The following of diktats as opposed to independent thought. And that idea of independent thought is something that we see troubling them the most today. Golwalkar, a crucial RSS thinker, had written that in simple words, permissiveness means there is no restraint on any kind of individuals on their talking, writing, and thinking. The first and foremost effect of this trend would be destruction of the social fabric that entity called society will disrupt and dissipate. So that is also the challenge being mounted against fascism today. What happens when women, the youth, Dalits, trans and queer folks speak out autonomously? When they assert that they will make their own choices of its sexuality, of education, of who they socialize with, who they live with, who they partner with, of love and of law. What happens when a Rohit Vemula and Payal Tadvi speak out? These are the Dalit voices they seek to quash, whose opportunities they seek to limit today, with the system setting out to discredit them, pull back scholarships that support their education, malign mothers like Radhika Amma, who is seeking justice. Or women like Soni Soris, Sudha Bharadwaj, Jasbir Nutt, and other farmer leaders, challenging paradigms of development. Or when younger women like Ishrat Jahan, Gulfisha Fatima, Devangana Kalita, Natasha Narwal, Safura Zargar, and millions of other women who were inspired and who inspired all of us to stand up against the CA-NRC project. Women who say, "Hum Bharat ki mata nahi banenge." This is when the fascist states then acts
throwing them in jail, filing false cases against them of violence, of murder, of anti-nationalism, questioning their morality, trying to silence them, because that is who they fear. They fear the misfits, the independents, the speakers and thinkers. So that is really who we need to be today, because we have no choice but to speak and think and act until a new day dawns. Thank you. Thank you, Vani. That was wonderful. I'm sure that our listeners and viewers are very much with you in the very acute understanding that you placed before us about the links between the whole issue of fascism and women's position in society, as well as the larger questions of gender, masculinity, etc. I'm sorry, because of the limited time, you've obviously had to compress very complex ideas and a very broad span into this kind of a capsule. We hope there'll be opportunities, other opportunities when you can express yourself at greater length. But thank you very much for bringing in this very crucial dimension, because I think it's extremely important for people to understand that fascism and communalism, they are not only about controlling the minority communities, the others, who are apparently the others, but it's also about control of sections within their own society, the poorer sections, women, it is about control, it is about preserving cultural, so-called within quotes, cultural values, which should not be questioned by people lower down in the hierarchy and upstarts like women. So thank you very much. It's now my great pleasure to invite Professor Gauhar Raza to make his presentation before us. Professor Gauhar Raza doesn't need any introduction to people who have come in response to the invitation from Anand. He's an integral part of Anand, has contributed enormously to what Anand has been doing over the decades, not just the years. And I would like to introduce Professor Gauhar Raza as somebody who's combined an interest, a professional interest in science and science education and popularization of science, with his very well-known interest in the arts, especially he's a very renowned poet. And apart from that, as I said, he's a social activist. He's also made some wonderful documentaries. For example, Jang-e-Azadi on the First War of Independence and Inqilab on Bhagat Singh and his contemporaries. His poetry collection, Jazbon Ki Law Tez Karo, has been noticed for the frankness of tone and for the social concerns that they take up and treat sensitively. In his most famous poem, Main Chahta Hoon, he expresses his helplessness to write a romantic poem in the days of darkness. He has also written lyrics for a Hindi film, Say Salam India, released in 2007. Gauhar. बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मिर्दुल्ला मुखर्जी। आज का दिन जिसकी आपने शुरुआत की इम्पोर्टेंस बताते हुए, वो उन सारे लोगों के लिए मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, जिसे हर साल मनाया जाना चाहिए, और इसलिए अनहद को मुबारकबाद भी देनी चाहिए कि आज का दिन मना रहे हैं, जब इंसानियत एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी कि वो शायद हिटलर का जो ख्वाब था वो पूरा हो सकता था। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में मेरा कोई दखल नहीं है, लेकिन आप लोगों से इतना तो सीखा ही है कि हिस्ट्री में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन हिस्ट्री एक रास्ता चुनती है। और आज के दिन खास तौर से
वो रास्ता इंसानियत ने चुन लिया, जिसकी वजह से हम पिछले लगभग 80-90 साल से अपने बच्चों को ये बता सकते हैं कि इंसानियत की वो जीत जिसका आपने जिक्र किया, वो जीत होगी हर आने वाले दौर में। सवाल ये है कि संघर्ष कहाँ तक हमको ले जाता है और हम कितना संघर्ष कर पाते हैं। प्रोफेसर पटनायक ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी बिल्कुल शुरू में लेक्चर के। उनका लेक्चर हमेशा ही ब्रिलियंट होता है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मैं वहां से शुरू करना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा कि जब हाशिए पर होता है तो फैशिज्म का एक नेचर होता है और उसमें बदलाव आता है जब वो सेंटर स्टेज की तरफ आ जाता है। हमें ये हिंदुस्तान में होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बात से एक और बात बहुत गहरी जुड़ी हुई है मेरे ख्याल में, कि फैशिज्म से लड़ाई की शुरुआत भी फैशिज्म के सेंटर स्टेज में आने से कहीं ज्यादा पहले शुरू हो जाती है। यानी अगर फैशिज्म को एज एन आइडिया देखें हम, तो हर डेमोक्रेसी में वो पनपता रहता है, कहीं पेरिफेरी के ऊपर, कहीं किसी के घर में, कहीं किसी के दुकान पर, कहीं किसी के ड्राइंग रूम के अंदर, या बाजारों में, या सड़कों में, या क्लासरूम्स के अंदर हमें पनपता हुआ धीरे धीरे दिखाई देता रहता है। जब कोई ये बात कहता है कि ये सारे लोग, हिंदुस्तान की जनता ऐसी है या मुल्क की जनता ऐसी है कि इसको डंडे से ही चलाया जा सकता है, यहाँ पर अगर मिलिट्री शासन हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वही फैशिज्म की सोच है जो कहीं ना कहीं पनप रही होती है। यानी अगर हम इतिहास को देखने की कोशिश करें तो फैशिज्म की लड़ाई जर्मनी में भी फैशिज्म आने से पहले, यानी 1933 से पहले शुरू हो चुकी थी। सेंटर स्टेज या पावर जब तक संभाली है उससे कहीं ज्यादा पहले शुरू हो चुकी थी। और इस लड़ाई में बिल्कुल फोर फ्रंट पर शुरुआती दौर में आइडियाज की लड़ाई में, आइडियाज की स्ट्रगल में, विचारों की संघर्ष में हमेशा ही हमारे समाज के इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, नॉवेल लिखने वाले होते हैं, फिल्मकार होते हैं, गाने लिखने वाले होते हैं, कविताएं लिखने वाले होते हैं, पेंटिंग्स बनाने वाले होते हैं, वगैरह वगैरह। और उसकी दो वजह होती हैं। एक तरफ तो कभी भी मेरे ख्याल में जो कलाकार होते हैं खास तौर से, और उसमें मैं इंटेलेक्चुअल्स को शामिल करना चाहता हूँ, वो सत्ता के खिलाफ ही होते हैं, बाय नेचर सत्ता के खिलाफ होते हैं। और दूसरी तरफ हिंसा के खिलाफ होते हैं। समाज में नॉर्मली एक अच्छा कलाकार हिंसा के खिलाफ होता है, इसलिए भी कि वो हिंसक समाज के अंदर उसकी कला पनप ही नहीं सकती, और ये एहसास हर कलाकार को होता है। मैं यहीं से ही अपनी बात को शुरू करना चाहता था कि पहले ही लड़ाई शुरू हो जाती है विचारों की, इससे पहले के सेंटर स्टेज में कोई भी फैशिस्ट फोर्स आ जाए। अगर हम जर्मनी के इतिहास को देखें तो बदलाव बहुत बड़ा आया जब 1933 में हिटलर ने सत्ता संभाल ली। उसके बाद सबसे पहला बड़ा अटैक, जो बहुत भयानक अटैक था, वो पॉलिटिकल लेवल पे कम्युनिस्ट के लिए था, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा अटैक, पूरी तरह से ऑल आउट काइंड ऑफ अटैक, जिसमें नो होल्ड्स बार जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उस तरह का एक हमला शुरू हुआ वहां के कलाकारों के ऊपर, वहां के बुद्धिजीवियों के ऊपर, वहां के नॉवेलिस्ट के ऊपर, वहां के फिल्म मेकर्स के ऊपर। और हालात कुछ ऐसे पहुंचे कि हजारों कलाकारों को जर्मनी छोड़ना पड़ा। लगभग 1600 आर्टिस्ट को वहां पर बैन कर दिया गया, और उनकी कलाकृतियां, उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, हर फील्ड से शामिल थे, इनकी कलाकृतियों को बैन कर दिया गया। हमें आज हिंदुस्तान में कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन सिर्फ यहीं पर नहीं रुका मामला कि उन्हें बैन कर दिया गया या उनके खिलाफ बातचीत की गई, बल्कि जब किताबें जलाने का एक अभियान पूरा शुरू किया गया
और गलियों और चौराहों के ऊपर ला करके किताबें इकट्ठा की गई। उसमें ज्यूज की किताबें खास तौर से शामिल थी, लेकिन ज्यूज के अलावा भी हजारों किताबें और उनकी होली जलाने का एक उत्सव मनाया गया। जो फैशिज्म करता है, फैशिज्म एंटी इंटेलेक्चुअल होना उसके लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो एक नए तरह का कल्चर क्रिएट करने की लगातार बात करता है। हमें आज हिंदुस्तान में भी नए तरह के कल्चर को क्रिएट करने की बात लगातार सुनाई दे रही है। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे जिनकी किताबें जलाई गईं। उसमें बर्तोल्ट ब्रेख्त से लेकर के टॉम मान, एरिक मारिया वगैरह जैसे लोग जो 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 जिनकी बेहद इज्जत थी, उनकी इज्जत खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसलिए उनकी किताबें जलाना बाहर निकाल करके लाइब्रेरी से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी फैशिस्ट फोर्स के लिए। वहां पर अगर हम देखें तो पर्सनल लेवल के ऊपर हिटलर एक अपने को पेंटर कहता था और पेंटर की तरह से अपने को देखना चाहता था। सिर्फ शुरुआत में ही नहीं, और वियना के इंस्टीट्यूट ने उसे 2 बार रिजेक्ट कर दिया था। ये उसके दिल में चुभी हुई बात थी, जिसको उसने माइन काम्प में भी लिखा है। लेकिन सिर्फ शुरुआत में ही नहीं, वो बाद में भी ये बात कहता रहा लगातार कि मैं जो अपना ख्वाब है, जब जर्मनी में पूरी तरह से उसको पूरा कर लूंगा तो मैं वापस पेंटिंग की तरफ लौट जाऊंगा और दुनिया मुझे एज पेंटर याद करेगी, मुझे एक पॉलिटिशियन की तरह से याद नहीं करेगी, एक राजनेता की तरह याद नहीं करेगी। ये बात उसने एक एम्बेसडर उस वक्त जो थे यूनाइटेड किंगडम से कि उनसे सीधे तौर पर कही थी। इस तरह से अगर हम गोएबल्स को देखें तो गोएबल्स एक राइटर बनना चाहता था, फेल हुआ उसमें। ये जो पिग्मीज होते हैं, जब ये सत्ता में आते हैं फैशिज्म की सीढ़ी चढ़ करके, तो जो ये कुछ बनना चाहते हैं उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा हमला करते हैं। और ये हमला जब होता है तो इस हमले में सिर्फ अपने आसपास के, अपने मुल्क के लोगों को डिस्क्रेडिट करने से काम नहीं चलता, बल्कि अपने मुल्क से बाहर की बाउंड्रीज में जो लोग आवाज उठाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि आइडियाज की लड़ाई कभी भी मुल्क की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ही सिर्फ नहीं लड़ी जाती, दुनिया भर में लड़ी जाती है। और इसीलिए उनके खिलाफ भी लगातार आवाजें उठानी जरूरी होती है। तो एक तरफ सोवियत यूनियन दुश्मन बन जाता है और ये कहते हैं, लगातार फैशिस्ट फोर्सेस ये कहना शुरू करती हैं कि जो कुछ हमारा कल्चर था, हमारी संस्कृति थी, उसको बोल्शेविक संस्कृति ने तबाह कर दिया है और तबाह कर रही है। दूसरी तरफ ज्यूज तबाह कर रहे हैं और तीसरी तरफ अमेरिकन कल्चर जो है वो हमला कर रहा है हमारे ऊपर, बाहरी हमला कर रहा है। इसके खिलाफ हमको उठना पड़ेगा और वापस जाना पड़ेगा अपनी पुरानी कदरों की तरफ, वो कदरें जो जर्मन कदरें हों, जो यूरोपियन कदरें हों। तो एक तरफ एशिया के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है, दूसरी तरफ बाकी मुल्कों के खिलाफ, तीसरी तरफ ज्यूज के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है। एक नए कल्चर की बात लगातार कर रही है और यहीं से निकलता है वो रेजिस्टेंस, वो प्रतिरोध जो इन आइडियाज को, इस सोच के खिलाफ लगातार लड़ती है। वक्त कम है, इसलिए मैं बहुत कम एग्जाम्पल्स के साथ अपनी बात को रखना चाहूंगा। ये रेजिस्टेंस सिर्फ जर्मनी के अंदर ही नहीं, बल्कि इस रेजिस्टेंस को हम जर्मनी से जो लोग भाग करके अपनी जान बचा के बाहर जाते हैं, जिसमें बर्तोल्ट ब्रेख्त भी शामिल हैं, जो वहां के सबसे बड़े कलाकारों में माने जाते थे, डायरेक्टर और प्ले राइट थे, ड्रामा स्टेज प्रोसीनियम के महान कलाकारों में आज भी माने जाते हैं। ऐसे लोग शामिल थे। इन लोगों में फिल्म मेकर्स शामिल थे, इन लोगों के अंदर टीचर्स शामिल थे,
एक लंबी लिस्ट है। अगर जो एक लिस्ट बाद में कंपाइल करने की कोशिश की गई है और उसमें कैटेगराइज करने की कोशिश की गई है, तो जिन लोगों के ऊपर हमला हुआ उनमें एक्टर्स थे, डायरेक्टर्स थे, चाइल्ड एक्टर्स थे, उसके अंदर सिंगर्स थे, नॉवेलिस्ट थे, ग्राफिक आर्टिस्ट थे, टीचर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, पोएट्स थे, पेंटर्स। ये एक चौबाई हमला जिसे कहते हैं, यानी ऐसा हमला जो पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश करे। और जब ये लोग बाहर गए तो इन्होंने न सिर्फ जर्मनी के अंदर जो बच गए उन्होंने, बल्कि जो बाहर थे उन्होंने भी पूरी तरह से अपनी जान की बाजी लगा दी। पर क्योंकि क्रिएटिव कम्युनिटी नए रास्ते तलाश करती है, इसलिए हमको बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं इस बात के कि बाहर बैठ करके भी उन्होंने इन ख्यालात के खिलाफ अपनी जंग को, अपने प्रतिरोध को जारी रखा, लगातार जारी रखा और नए नए तरीके निकाले। बहुत सारी ऐसी छोटी किताबें, ऐसे कागज के ऊपर जो कागज बहुत खराब कागज था, ऐसी जो कि उस वक्त साइक्लोस्टाइल वगैरह की जा सके, ले जा करके ऐसी किताबें लिखना शुरू की और उनके कवर पेजेस अजीब तरह के बनाए। कहीं कवर पेज के ऊपर सीने वाली मशीन बनी हुई थी, उसकी बात हो रही थी कवर पेज पे। कहीं नेविया क्रीम कवर पेज के ऊपर थी, ऐसा लगता था कि वो नेविया क्रीम के बारे में है। कहीं वो ट्रैक्टर के बारे में है। एक अजीब किताब लिखी किसी ने, जिस किताब के कवर पेज के ऊपर टाइटल था कि हमारा खूबसूरत जर्मनी, और अंदर उसके एक नक्शा था जिसमें सारे जो गैस चेम्बर्स थे उन सब का वो नक्शा बाहर तक पहुंचाए। ये नए नए तरीके प्रतिरोध के निकालने की जरूरत थी उस वक्त। और जैसा मैं कह रहा हूं कि ये जो कलाकारों की कम्युनिटी होती है, ये जब अपनी पूरी कला को लगा देती है, अपनी पूरी क्रिएटिविटी को लगा देती है फैशिज्म से लड़ने के लिए, तो फिर नई नई चीजें पैदा होती हैं। और यही जर्मनी में हमें होता हुआ दिखाई दिया। एक अजीब सा वाकया बहुत जगह हमको सुनने को मिलता है। एक बूढ़ी औरत, बीमार औरत, उसके पर्स में से एक पर्चा मिला वहां पर, और उस पर्चे में एक नज्म का कुछ हिस्सा लिखा हुआ था, 2-3 लाइनें। और वो लाइनें ये कह रही थी, जिसका मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूं अंग्रेजी जबान से, कि हमें लीडर हाकिम जैसा चाहिए, मौत के सौदागर जैसा नहीं। और इस पर्चे के मिलने की वजह से जो उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया, जिस तरह के मुकदमे चलाए जाते थे उस वक्त, उस मुकदमे में उसे 4 साल के लिए कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। ऐसी लातादाद और एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जो छोटी छोटी नज्मों, छोटे 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 गानों को सुनने की वजह से, खाली सुनने में उसके इल्जाम लगा करके लोगों को भेज दिया गया। मैं ये बात बार बार रेज करता रहा हूं कि क्या वजह है कि ये 2 लाइनें जो अभी आपने सुनी, अगर कहीं किसी पर्चे पे लिखी हुई हो तो उसके जुर्म में किसी को लगभग मौत की सजा दे दी जाए। क्या वजह है कि एक कोई गाने के लिए किसी के ऊपर जबरदस्त हमला किया जाए जिसमें 200 लफ्ज भी नहीं होते? क्या वजह है कि कोई किताब लिखे एक अपने कोने में बैठ करके एक कमरे में, और उसको फिर जेल की सलाखों के पीछे या कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाए? कोई सिर्फ ये मालूम करने के लिए जा रहा हो कि
किसी लड़की का रेप हुआ है तो उसमें क्या कुछ हुआ है, उसको यूएपीए लगा दिया जाए उसके ऊपर। क्या वजह होती है इसकी? वो तो ज्यादा से ज्यादा लिख ही सकते हैं ये लोग झंडा उठा करके हमेशा सड़कों पर नहीं होते। ये जो कलाकार होते हैं ये अपनी कलाकृतियों को एक शायद 20 इंच बाई 20 इंच में पेंटिंग की तरह से एक्सप्रेस करते हैं। उससे फैशिस्ट इतना क्यों डर जाते हैं? उससे क्यों क्यों इतना सहम जाते हैं? क्या वजह होती है? हमें आजकल हिंदुस्तान में शायद सबको ही ये याद है कि किसी ने एक नज्म लिखी थी जर्मनी में, जिसका ट्रांसलेशन दुनिया की शायद हर जबान में हो चुका है, कि जब वो कम्युनिस्ट के लिए आए तो मैं खामोश रहा। ये नज्म आज के हिंदुस्तान में कितने ही लोगों ने कितनी बार अपनी फेसबुक के ऊपर डाली है। लगभग 70-80 साल पहले लिखी हुई नज्म, इसके कई वर्जन्स हैं। ये नज्म हिंदुस्तान के एक कोने में कैसे जिंदा हो जाती है? अगर हबीब जालिब ये बात लिखते हैं कि तुमसे पहले भी एक शख्स यहां तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे उतना ही यकीन था, तो वो हिंदुस्तान में पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके एकदम से कैसे जिंदा हो जाती है? साहिर लुधियानवी जब ये बात कहते हैं कि दौलत बढ़ी तो मुल्क में इफलास क्यों बढ़ा, गरीबी क्यों बढ़ी, ये लाइन एकदम से 30-35 साल बाद क्यों उभर करके बाहर आ जाती है? लोग इसका क्यों इस्तेमाल करने लगते हैं? जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है। क्यों ऐसा होता है कि लोग आज 20-25 साल बाद, लगभग नहीं ज्यादा, लगभग 70 साल बाद इसको लिख करके अपने पोस्टर बना करके क्यों चलने लगते हैं? यही वजह है मेरे ख्याल में कि फैशिस्ट कल्चरल रेजिस्टेंस से सबसे ज्यादा सहमे होते हैं। उन्हें मालूम होता है शायद प्रोग्रेसिव फोर्सेस को इतनी कदर नहीं करते जितनी फैशिस्ट कदर करते हैं। उन्हें यह मालूम होता है कि स्पेस में और टाइम में कल्चरल एक्सप्रेशन का जो प्रतिरोध है वो कहीं ज्यादा गहरी और लंबी मार करता है। वो दिल, दिमाग और लोगों के एटीट्यूड पर असर लगता है, और इस वजह से उनके लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो हमला करें। लेकिन कल्चरल रेजिस्टेंस ज्यादातर उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। हमें हिंदुस्तान में, और मुझे खास तौर से इस बात पर फख्र है कि सबसे पहले जब फैशिस्ट फोर्सेस, चाहे वो NDA 1 के दौरान का पीरियड देखें या इस बार 2014 के बाद का पीरियड देखें, सबसे पहले हमारी इंटेलेक्चुअल क्लास, हमारे राइटर्स, हमारे पोएट्स, हमारे फिल्म मेकर्स, हमारे म्यूजिशियंस, हमारे विजुअल आर्टिस्ट खड़े हुए और उन्होंने इस मुल्क को खतरे का एहसास दिलाया। याद रखना चाहिए, और बहुत जो जब फैशिस्ट फोर्सेस आते हैं तो उन्हें आम इंसान की जिंदगी की कोई चिंता नहीं होती, उन्हें कोई कंसर्न नहीं होता है कि कोरोना किस तरह से फैल जाए। उनको रैलीज में और कुंभ मेले में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ये चेतावनी 2014 की शुरुआत में ही सबसे पहले इस मुल्क के कलाकारों ने ही दी थी। मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि मैं उस कलाकार फैमिली का हिस्सा हूं, और मेरे ख्याल में हमारे यहां भी कलाकारों की तरफ से जो रेजिस्टेंस आया बीच में
I think Gohar's video has got stuck, Mridula. So What shall we do? yeah, I think move on. Huh? Yeah, he was concluding, so that's fine. So we go forward. Yeah. Unfortunately, there is some technical issue with Gohar's video transmission. It seems to have got stuck, but I think he was concluding anyway. So and the time is running out. So we'll move forward. I would thank Gohar for a very insightful presentation. I think he's made the point very, very forcefully and with a lot of proof that cultural resistance is at the heart of resistance to fascism. He's pointing out to us that it is these sections of society who first notice and who first begin to point out to the rest of society the dangers that are inherent in fascism, and also how the creative expression of the resistance is something that is also very effective. There are all kinds of subtle ways and ways which defy the controls which have been imposed on society, through which the artistic community and the intellectual community defy the restrictions that have been placed on society. He made many other points also, which I will not repeat. But I think we owe a big thanks to Gohar for bringing in this very, very crucial dimension, because resistance is not just political. Resistance has to be at the level of society. And who reflects society better than its intellectuals and its artists and its creative community? Thank you, Gohar, for a wonderful presentation. I will now make my concluding remarks. We've traversed a very wide canvas in this discussion. We've also taken a lot of time, more than 2 hours, and I'm sure all of you have lots of other pressing issues on your plate. I could talk about many things, but I would like to conclude by drawing your attention to a work which came out about 3 years ago by an American scholar, a philosopher, political scientist, Jason Stanley, titled How Fascism Works. The reason I'm doing this is because though there are any number of very fine works on the history of fascism, on the structures of fascism, on ideology, on its mass character. But this is a recent book which not only gives us a typology of fascism, but also brings in a lot of very recent and contemporary examples from otherwise democratic societies to show us how fascist tendencies, fascist forces are at work and can be at work even in societies which are otherwise formally and substantially democratic. Many of his examples are from the US itself during the Trump period, and we can happily now, of course, look back on it and say that it seems like a bad dream. But it wasn't so long ago that it didn't seem that we were ever going to get out of that very bad dream. He also takes a lot of examples from across the world, from Europe, contemporary examples, as I said, from Turkey, from Hungary, from Poland, and connects it all to the history of fascism. And what he shows us in this book is that how all fascist parties, regimes,
political forces have some common features which are recognizable. Now, again, he's not the first person who's saying this, but I think he says it in a brilliant manner, in a very accessible manner. It's a very short book. And I would urge all those who are here to, if they haven't read it already, to please do so, and to recommend it very strongly to their friends, students, co-workers, activists, etc. I will just give you 2 or 3 brief examples to explain why I'm taking up my very brief time that I have to actually not talk about broader issues or what I think, but about Jason Stanley's work. For example, one of the things which he has a number of separate chapters on different aspects of what is fascism, or what makes fascism work. And in that, the first thing which he tells us, and I think it's very important because often it is said, why are you calling this a fascist regime when it has come to power through elections? And he points out that how fascists almost always come to power through elections, but they don't want to hold more elections after they have come to power, because they also have this notion of being the greatest, and that now that they are there, they can deliver whatever is necessary for society. So they do not have a commitment to freedom and to elections, but they do come to power through democratic elections. In fact, Hitler, once he came to power, started praising true Germanic democracy. And he started, in fact, saying that rule by an absolute leader is more democratic because one person is actually accountable for what is happening. So he started to justify rule by absolute rule by an individual as the most democratic form. We have various examples, all of which I'm sure all of you can think of immediately. The other very interesting thing is about, which he points out, is that how the freedom of speech, the idea of freedom of speech, which is a basic liberal democratic idea, is the argument is twisted around to create space for anti-democratic, racist, communal, misogynist arguments. And that how proponents of this idea take advantage of the dilemma faced by democratic forces, that in a democracy, you can't use anti-democratic means to suppress anti-democratic forces. In fact, he takes us back to Plato's Republic and says that Socrates argued that people are not, that democracy, by permitting freedom of speech, opens the door for a demagogue to exploit the people's need, their desire for a strong man. The strong man then uses this freedom to prey on the people's resentments and fears. Once the strong man seizes power, he will end democracy. Republic therefore argues that democracy is a self-undermining system whose very ideals lead to its own demise. And fascists have always been well acquainted with this recipe for using democracy's liberties against itself. In fact, Hitler's famous minister, Goebbels, once said, I will quote, "This will always remain one of the best jokes of democracy, that it gives its deadly enemies the means by which it was destroyed." So we must watch out for these arguments about freedom of speech being suppressed, whereas the whole purpose is to assert ideas which are against the freedom of speech. Another very basic tenet of fascism is that it is anti-intellectual. It is typical of fascism that it attacks universities. The University of Frankfurt was one of the prime targets in Germany. You know the universities in India, mine included, which have been the prime targets of fascist forces. In our country, we can give you many more examples. In Hungary, the famous Central European University became the first
target, almost destroying it, and so many others. And very interestingly, in these universities, he tells us it is leftist or Marxist professors who are the prime target always. In the US, they even have started questioning the system of tenure, saying, why should professors who indulge in political stuff have tenure? It's very, very fascinating, the examples which he has given from contemporary American society. Another tenet, which is very, very familiar to us in India, is that all fascist forces rely on conspiracy theories. They always use these to further their ends. And usually they are so outlandish that they cannot be believed. In fact, as you know, Hitler said, you have to tell a big lie to make people believe, because if you tell a simple lie, people say, maybe this is not so. But if it's outlandish, people say, well, it must be true. Otherwise it can't be. Nobody can tell such an outlandish lie. Now, as a historian, I can't resist this. The most famous conspiracy theory, which became the basis of Nazi ideology, was based on an early 20th century hoax, a book which was titled Protocols of the Elders of Zion, supposedly written as an instruction to Jews for world domination. It was in reality plagiarized and distorted from an 1864 book, which was supposed to be based on a dialogue between Machiavelli and Montesquieu. But so popular did this book become, and people took it as God's truth, that by 1925, Henry Ford in the US, owner of Ford Motors, distributed 500,000 copies of this fabricated book in the United States. Hitler and Goebbels believed it to be true. And what was this? It was that these people, these elders of Zion, that how they are planning. It's a whole conspiracy for world domination, and people believed this. A contemporary example, which you people will remember, is the conspiracy theory titled Pizzagate, according to which Hillary Clinton was involved in a child trafficking racket run out of a pizza restaurant in Washington. One man believed it so much that he actually turned up at the pizza joint with a gun to shoot these people who were indulging in child trafficking. The more outlandish, the more convincing. Another basic tenet is that all fascists want to instill pride in a mythic past. They have a notion of history which is not historical at all. It is mythic. And they want to instill national or racial pride in their audience. And here again, it's very interesting. A common feature today, which you'll find across the world, is of attack on the social sciences and an argument for skill-based education. So whenever you hear that argument, your antennae should go up and you should be alert as to what is behind this whole argument. As was pointed out right in the beginning by Professor Prabhat Patnaik, and this is again one of the basic ideas that we have to understand, that fascism and ideologies based on hierarchy essentially come into play to justify inequality in society. So communalism, racism, all kinds of extremist white supremacy, all these ideologies, male supremacy, are brought in when you want to justify inequality. We are inherently superior, said white planters to slaves, and mobilized poor whites behind them. And imperialists did it all the time. We know in India. Victimhood is another very, very important tenet. We all know how majorities and beneficiaries of the system are made to feel like victims. In India, the Hindus have been convinced that they are the victims of a minority with the Muslims. How was this done? Historians, again, can tell you how 100 years ago, Hindus were told, you may be a majority, but you are weak.
the typical stereotype of a baniya was imposed on all Hindus. You are weak, the Muslims are physically strong, they have enormous sexual appetite. So an image of the brute, a sexual brute of the Muslim was created in order to frighten the vast majority of the Hindus. This is done. Whites are convinced in the US that the blacks can be the oppressors. Blacks are only 10%. Citizens are convinced that immigrants can be their enemies. Immigrants are usually a tiny proportion in society, but they are made into the enemy. So the feeling of victimhood is something that's an extremely important tenet, how majorities, the beneficiaries are, through an ideological sleight of hand, made to feel the victims. The last point I will mention is the link between fascism and nationalism. Here, I think Stanley makes an very important point, a point which Professor Patnaik has been making for the last few years. I've heard him many times, that there are two kinds of nationalism. And he says, in the face of discrimination, oppressed groups throughout history have risen up in movements that proclaimed pride for their endangered identities. And in the United States, Black nationalism arose as a response to toxic racism. Jewish nationalism arose as a response to toxic anti-Semitism. These nationalist movements, which arise as responses to oppression, are different. Anti-colonial struggles take place under the banner of nationalism. Mahatma Gandhi used Indian nationalism as a tool against British rule. This kind of nationalism that arises from oppression is not fascist in origin. They are equality-driven national movements, he says. However, in stark contrast to a version of nationalism with equality as its goal, fascist nationalism is a repudiation of the liberal democratic ideal. It is nationalism in the service of domination, with the goal of preserving, maintaining, or gaining a position at the top of a hierarchy of power and status. So the difference between nationalism motivated by oppression and nationalism for the sake of domination is clear when one reflects upon their respective relationships with equality. That's the prism through which you can grasp this, he says. And I think that's a very, very perceptive point. But that difference can be invisible from the inside, he says. He also points out that there can be historical situations where nationalist sentiments arise from long histories of oppression. And he gives the example of Serbia and Kosovo, very contemporary examples, where he says that Serbians have unquestionably been oppressed in the past. One doesn't have to go back to the Battle of Kosovo in 1389, from which Serbians draw a lot of their national anger and identity. Even in World War II, he says, they were murdered en masse in concentration camps. Many contemporary Serbians come from families who are able to summon up a legacy of persecution. And then what happened? This is the tragedy. Serbian nationalists use this background to justify the persecution of less powerful and more marginalized local Muslim populations. So this kind of connection between a nationalism arising out of oppression, but then becoming a repressive nationalism, the transition which then can also take place. It is a complex relationship. But we need to understand this because very often nowadays I find that fascism and nationalism are collapsed, they are equated. It is not, the distinction is not made between the nationalisms which arise out of oppression and the nationalisms which arise in order to service domination and discrimination. It's 7:30. We've taken a lot of your time. It remains for me to thank all of you for being here for so long. And I will hand over now to Anand for any concluding remarks that they may wish to make. Thank you so much, Professor Mridula Mukherjee. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जिस तरीके से पूरा इस
पूरे वेबिनार को जिस तरीके से हैंडल किया है, और जो लोगों को नहीं समझ में, मतलब ओवरऑल तो બધા सब समझ में आ ही गया, पर जो नहीं समझ में आया वो आपने आखिरी में कंक्लूड करते टाइम या जो लास्ट में जुड़े हैं उनको बहुत अच्छे से कंक्लूड किया। और इस तरीके के वेबिनार जो होते हैं वो अभी भी बहुत कम हो रहे हैं, और ये बात जो आज यहाँ हुई है वो हिंदुस्तान में और दुनिया भर में जो जिन लोगों को भी हम जानते या नहीं जानते उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो सभी साथियों से जो आज जुड़े उनसे गुजारिश है कि अनहद के फेसबुक पेज पे ये पूरा वीडियो डाला गया है, तो आप वहां से आप जहां जहां भी शेयर कर पाए वहां शेयर करें। और मैं स्पेशली प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी के साथ साथ प्रोफेसर प्रभात पटनायक, प्रोफेसर राम पुनियानी, प्रोफेसर चरणजीत सिंह, वाणी सुब्रमण्यम, प्रोफेसर गोहर रजा और अनहद की पूरी टीम की आज मोबिलाइजेशन में और बाकी सारी टेक्निकल उसमें जिन्होंने मदद की है, वो सभी साथियों का अनहद की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया मानता हूँ। और हम आने वाले टाइम पे अगली 16 तारीख को किसान और चुनौतियां, किसान आंदोलन और चुनौतियां ऐसे ही एक वेबिनार कर रहे हैं जिसमें राकेश टिकैत जी और बाकी किसान नेता रहेंगे।